how do we ensure that the Nissan Magnite is ready for the roads of the world? Hi, I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is a high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पिछले 3 महीने से आप लोगों को जो है लगातार सिम्स अस्पताल चेन्नई, वहां से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, सर्जन्स आते हैं, हम उन लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन भी देते हैं, ताकि आप लोगों को वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो जिस भी फील्ड में वो माहिर होते हैं, उनसे रिलेटेड हम उनसे बातें करते हैं, ताकि आप लोग अगर ऐसी कोई भी बीमारियों से जूझ रहे हो तो आप लोगों को आपके सवालों का जवाब भी मिल सके। तो आज हमारे साथ सिम्स अस्पताल से डॉक्टर मोहम्मद इदरीस सर हैं, जो एक कार्डियो थोरैसिक सर्जन हैं। कार्डियो से रिलेटेड आप किसी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम कुछ सवाल जवाब करेंगे सर से इन्हीं बीमारियों को लेकर और जानेंगे कि सर उनके विषय में क्या जवाब देते हैं, ताकि आप भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो फिर आपको उसका जवाब भी मिल पाएगा। साथ ही हम आप लोगों को जो है सिम्स अस्पताल का कॉन्टैक्ट नंबर भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन में। अगर आप लोगों को इनसे जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो आप उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इदरीस सर जो है हिंदी उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए वो इंग्लिश में बोलेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को हिंदी में उसका अनुवाद दे सकूं। जय हिंद सर। Jai Hind. वेलकम टू अंडमान निकोबार आइलैंड सर। Thank you so much. It's a pleasure being here. Last one day here, I will be here. First time? No, I've been here in 2016-17 as a tourist. I was there. Okay. First time coming for service here. कैसा लगा आपको? How was your experience? It's a wonderful experience. Beautiful city, so calm. Out from the city life, Right, it is right. very nice, very beautiful. एंड आज जो जितने मरीज आए थे आज डॉक्टर तुलसी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक में, उनके साथ जो एक्सपीरियंस था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद पीपल टुडे इन द डायग्नोस्टिक सेंटर? So morning we came here. There were good crowd. So people came and walked in here. We had a good number of patients. They were also benefited, and we had a good service over there. And we discussed the other patients benefited from here. So for further investigations, we'll be helping them at SIMS Hospital back in Chennai and helping out there. So what was the main problems people were coming for, like related to heart? Main problem is patients come with chest pain or breathing difficulties. So when they start walking, they'll have some breathing difficulties. Or some patients came with chest pain. They walk for a few meters or half a kilometer, they start having chest pain. Or some patients will have palpitations. That is like the heartbeat will be increased and they will feel tup 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 tup. So fast. So that is when these patients will come back to us for some treatment like. सर का ये जब मैंने सर से ये पूछा कि आज उनका जो मरीज आए थे डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक में, तो
उनका कैसा अनुभव रहा, किस प्रकार के मरीज ज़्यादा आए थे। सर का कहना था कि ज़्यादा पेशेंट आज वो लोग थे जिनको जो है उनके सीने में जैसे दर्द होना, अचानक से दर्द उठना, या बहुत से लंबे समय से उनको दर्द होना, या उनका अगर वो थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनको सीने में दर्द होता है। और फिर कुछ लोगों का जो है दिल बहुत ज़ोरों से कभी कभी धड़कने लग जाता है। तो ऐसे ऐसी शिकायतें लेकर पेशेंट आए थे। एंड सो व्हाई एग्जैक्टली डज दैट हैपन सर, कैन यू एक्सप्लेन दैट? So the heart problems can be of different things. One is because the chest pain happens because when the flow to the blood vessels of the heart is actually having a muscle. So when the flow to that particular muscle is decreased because of some disease like cholesterol particles get deposited and the flow decreases, they will have chest pain. सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वन ऑफ द मेन रीजन, जो मुख्य कारण होता है हमारे सीने में दर्द होने का, कि जब हमारा जो रक्त है अगर सही तरीके से उसका जो एक फ्लो में अगर वो नहीं फ्लो करेगा, हमारे हृदय को नहीं मिलेगा, तब ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसका होने की वजह बहुत सारी कारण होते हैं जिन वजह से ये होता है, वो हम सर से जानेंगे जी। Then the breathing, when the heart function slowly decreases, when because of the blood flow decrease, so the heart function also sometimes gets decreased. So the heart pumping will come down. So those patients will have again breathing difficulties also. तो सर का कहना है कि जब इस तरीके से रक्त अगर सही मात्रा में और सही समय से अगर शरीर के दूसरे अंगों से, दूसरे हिस्से से हमारे हृदय में नहीं पहुंचती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो भी ठीक से काम नहीं करता है, जिससे अनेकों किस्म की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। Then again there is something called valves in the heart. There are 4 valves in the heart. So normally the valve should open up and the blood will cross the valve and it should cross properly. Sometimes the valve may not open properly or it may not close properly. Why? So there are multiple diseases like rheumatic heart diseases or in old age it can happen. So those times when the valve function is abnormal, that is it cannot open fully or it cannot close fully. So those patients will again have breathing difficulties. सर का कहना है कि हमारे हृदय में 4 वेल्व होते हैं। मुझे उनका हिंदी अनुवाद नहीं पता है कि वेल्व को क्या कहते हैं, लेकिन 4 वेल्व होते हैं जिसके थ्रू जो है जो रक्त होता है, जो नसें होती है, वो हृदय से होते हुए जाती है। और यही जब आप कई सारे रोगों से ग्रसित होते हो तो ये जो वेल्व है ये सही तरीके से खुलना और बंद होना इसका खराब हो जाता है, जिस वजह से आपको हृदय में दर्द होना और हृदय की तकलीफें शुरू होती है। So if these conditions happens, one is when the blood flow is reduced to the heart. So that is when patient will have heart attack. If they have heart attack, there are 3 type of treatment. One is they can have only medicines. Other is sometimes stenting is possible. Other is bypass surgery which we can do. सबसे पहला तो यह है कि दवाइयों के ज़रिए कई सारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं जो इसकी दवाई खाते हैं ताकि उनको हार्ट अटैक ना आए। और दूसरा एक तरीका है स्टेंटिंग कहा जाता है, जो सर ने जैसा भी बताया कि एक मेटल पाइप टाइप होता है जो आपके शरीर में डाला जाता है ताकि वहाँ से आपका ब्लड फ्लो अच्छे से आपके हृदय तक पहुँचे और आपको ऐसे हृदय रोग से ना हो। और तीसरा मुख्य वो है कि बाईपास सर्जरी। हमने सुना ही है कि हमारे हृदय रोग से जो लोग ग्रसित होते हैं उनका जो है बाईपास सर्जरी होता है। Okay, so how can a person avoid himself to get all this kind of heart problems? So these patients have to be physically fit. So they should have a regular walking, a good controlled diet where they should reduce the cholesterol type of foods. They have to reduce fried items. They have to reduce. Then if they have a diabetes, they have to control the blood sugar. And then if they have hypertension, high blood pressure, they have to reduce the blood pressure. And if they are family, if a family member is having a cardiac disease, like if the father is having a cardiac disease, the son is prone to have a
cardiac disease. So he has to have a It regular can be checkup. genetic. Genetic, exactly. So he has to have a regular follow-up. सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि हृदय रोग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ जा सकती है। अगर आपके पिताजी को है तो आपको भी वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि वही खून आपके शरीर में भी आता है, तो फिर ये तकलीफें आपको हो सकती है, आपसे आपके बच्चों को भी जा सकती है। इससे बचने का मूल मंत्र एक ही है और वो है कि फिट। आपने जो है अपने डेली जो लाइफस्टाइल है आपका, उसको ठीक रखना है। आपने अपने खाने पीने की आदतों को बदलना है। जैसे सर अभी कह रहे थे कि तेल की मात्रा जितनी कम हो उतनी करनी चाहिए और फ्राइड आइटम से तो बहुत ही दूर रहें। ये मुख्य वजह होती है हृदय रोग को लेकर। एनी मोर एडवाइजेस टू द पेशेंट्स आल्सो who visited you today and also to the people of Andaman Island, sir? So make yourself fit here. Keep regular walking, at least of 10 minutes to 20 minutes every day will do better than without walking. So that don't have a sedentary life. That always don't sit down. So these keep yourself and have a normal good diet. So keep yourself healthy. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच सर का हमारे साथ सिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, जो एक कार्डियो थोरेसिक सर्जन है, जो आज यहाँ पर हमारे तुलसी हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक ग्यारचरमा में आए थे और आज इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को वहाँ पर देखा और जो भी मरीज़ उनके पास गए थे उनको भी लाभ मिला, क्योंकि इन्हीं सब तकलीफ़ों को लेकर लोग जो है चेन्नई तक जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जिसमें उनका काफ़ी पैसा भी जाता है और उनका समय भी जाता है। तो ऐसे जो सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इनका हमारे अंडमान निकोबार में आ जाने से उन लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है जो इन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए मुख्य भूमि जाना चाहते हैं। हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे सवालों के जवाब भी दिए। अंत में सर ने यही कहा है कि एक अच्छे जीवन के लिए, एक तंदुरुस्त स्वस्थ जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 20-25 मिनट वॉकिंग ज़रूर करें। जितना हो सके अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए, एक जगह बैठे मत रहिए। खाने पीने का ध्यान दीजिए, ज़्यादा तेल मसाला को अवॉइड करें और नॉर्मल एकदम सादा खाना अगर आप खाते हो बिना तेल मसाला का, तो वह आपके शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज डॉक्टर इदरीस द्वारा बताए गए जो भी बातें थी वो पसंद आई होगी और आप उन पर अमल भी करेंगे और एक स्वस्थ जीवन भी जिएंगे। हम इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।